So good morning. I just want to roughly announce a little bit, having talked it through with Luang Por Jundee and Mahapanyo. This morning, Luang Por Jundee is having a rest because it is going to be a very long night as well for us, kind of flying overnight and immediately coming back to the monastery where there's a lot of things waiting. So he chose to come out in the afternoon for the final session, and this morning he'll have a rest. And I'm happy to be here with you, and I'd really like to hear the Pali Hindi chanting. It'll be a gain for me, and I will try to educate myself. I don't think I can memorize it that quickly. I can't read yet, but I'll have my joy in making sense of the Hindi Pali overlap. It's a great experience for me to see how much is in the Hindi how much is Sanskritized and Paliized words. So I suggest we ask Venerable Mahapanyo to lead the chanting, and you can do something like maybe like a good dose of chanting, and then we sit for a certain period, maybe 45 minutes, something like that, and then there's open space. If there's a Dhamma discussion, I'm open for it. If there's like a topic I should just simply say a few words on, then you can also prompt me. And then maybe at 10:45, I'll have a short kind of going back to my room, and then at 11 o'clock we'll have Luang Por Jundee come for the meal offering. So does that make sense? Good time. Okay, so let's start paying respects. तो हम लोग प्रातःकालीन वंदना करेंगे। आपके पास चैंटिंग बुक्स हैं सबकी सीट पर, पेज नंबर 9 से हम करेंगे। आप लोग साथ कर सकते हैं। कोशिश करें कि जो लीडर है, इस केस में मैं, मेरे साथ करें, मेरी स्पीड के अनुसार, और जो रिदम हम वातपानानाचात में फॉलो करते हैं हम उसके अनुसार करेंगे। योसो भगवा अरहं सम्मा सम्बुद्धो स्वाखातो येन भगवता धम्मो सुपटिपन्नो यस्य भगवतो सावक संघो तन्मयं भगवन्तं सधम्मं ससंघं इमे हि सखारे हि यथारहं आरोपिते हि अभिपूजयाम। वे जो हैं अरहंत भगवान सम्यक संबुद्ध, भगवान के द्वारा अच्छी तरह समझाया गया धर्म के मार्ग को अच्छी तरह प्रतिपादित करने वाले भगवान के श्रावक संघ, उन भगवान बुद्ध धर्म
और संघ की हम यथोचित सत्कार से पूजा करते हैं। साधुनो भन्ते भगवा शुचिर परिनिभूतोऽपि पश्चिमा जनतानुकंपमानसा इमे सखारे दुगत पणाकार भूते पटिगण्हातु अंहा कंदी घरतं हिताय सुखाय। हमारा सौभाग्य की भगवान को महान निर्वाण की प्राप्ति के बाद भी आगे आने वाली पीढ़ी पर अनुकंपा थी। आदर पूर्वक दी गई यह तुच्छ भेंट कृपया स्वीकार करें। हमारे दीर्घकालिक हित और सुख के लिए। अरहं सम्मा संबुद्धो भगवा बुद्धं भगवन्तं अभिवादेमि। स्वाक्षातो भगवता धम्मो धम्मं नमस्सामि। सुपटिपन्नो भगवतो सावक संघो संघं नमामि। अरहंत भगवान सम्यक संबुद्ध भगवान बुद्ध का मैं अभिवादन करता हूँ। भगवान के द्वारा अच्छी तरह समझाया गया धर्म को मैं नमन करता हूँ। भगवान के श्रावक संघ जिन्होंने मार्ग को अच्छी तरह प्रतिपादित किया, उस संघ को मैं नमन करता हूँ। अगला पेज, नेक्स्ट पेज। अन्नमयं बुद्धस्य भगवतोपभाग नमकारं करोमसे। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। नमस्कार उन्हें जो हैं अरहंत भगवान सम्यक संबुद्ध। नमस्कार उन्हें जो हैं अरहंत भगवान सम्यक संबुद्ध। नमस्कार उन्हें जो हैं अरहंत भगवान सम्यक संबुद्ध। हन्दमयं बुद्धाभितुतिं करोमसे। योऽसो तथागतो अरहं सम्मा संबुद्धो वेज्याचरण संपन्नो सुगतो लोकविदु अनुत्तरो पुरुष धम्म सारथी सत्ता देव मनुस्सानं बुद्धो भगवा। वे जो हैं तथागत अरहंत सम्यक संबुद्ध प्रज्ञा और आचरण से संपन्न सुगत एवं लोक ज्ञाता भटके हुए मनुष्यों को संयमित करने वाले अनुपम सारथी देवों और मनुष्यों के शास्ता भगवान बुद्ध।
यो इमं लोकं सदेवकं समारकं सब्रह्मकं ससमन ब्रह्मणिं पजं सदेव मनुस्संशयं अभिन्या सचिकत्वा पवेदेसी। जिन्होंने इस लोक में देवों, मार, ब्रह्मों, श्रमणों ब्राह्मणों, देवों, मनुष्यों को स्वयं साक्षात्कार कर विशिष्ट ज्ञान दिया। यो धम्मं देशे सियादि कल्याणं मध्य कल्याणं पर्योसान कल्याणं सात्थं सबयंजनं केवल परिपुण्यं परिशुद्धं ब्रह्मचर्यं पकासेसि तं अहं भगवन्तं अभिपूजयामि तमहं भगवन्तं शिरसा नमामि। जो धर्म सिखाते हैं वे है आरंभ में कल्याणकारी, मध्य में कल्याणकारी, अंत में भी कल्याणकारी। उन्होंने परिपूर्ण, परिशुद्ध, पवित्र जीवन अर्थ और रीति सहित समझाया। मैं उन भगवान की पूजा करता हूँ, मैं उन भगवान को सिर झुकाकर नमन करता हूँ। अन्नमयं धम्माभितुतिं करोमसे योऽसो स्वाक्षतो भगवता धम्मो संदिट्ठिको अकालिको एहिपस्सिको ओपनयिको पाश्चात्तं वेदितव्यो विन्युहि तं अहं धम्मं अभिपूजयामि तमहं धम्मं शिरसा नमामि। जो धर्म भगवान ने अच्छी तरह समझाया यही स्पष्ट दिखता है, कालातीत है, अन्वेषणा को प्रोत्साहित करता है, अंतर्मुखी करता है, प्रत्येक प्रज्ञावान को व्यक्तिगत रूप से अनुभव होता है। उस धर्म की मैं पूजा करता हूँ, उस धर्म को मैं सिर झुकाकर नमन करता हूँ। अन्नमयं संघाभितुतिं करोमसे योऽसो सुपटिपन्नो भगवतो सावक संघो उजुपटिपन्नो भगवतो सावक संघो न्यायपटिपन्नो भगवतो सावक संघो सामीचिपटिपन्नो भगवतो सावक संघो यदिदं चत्तारि पुरुष युगानि अट्ठ पुरुष पुग्गला एष भगवतो सावक संघो आहुनेयो पाहुनेयो दक्षिणेयो अंजलिकरणियो अनुत्तरं पुण्यखेतं लोकस्य तं अहं संघं अभिपूजयामि तमहं संघं शिरसा नमामि। धर्म के मार्ग को अच्छी तरह प्रतिपादित करने वाले भगवान के श्रावक संघ, धर्म के मार्ग को सीधे प्रतिपादित करने वाले भगवान के श्रावक संघ,
धर्म के मार्ग को ज्ञान पूर्वक प्रतिपादित करने वाले भगवान के श्रावक संघ, धर्म के मार्ग को निष्ठा पूर्वक प्रतिपादित करने वाले भगवान के श्रावक संघ, जो हैं 4 युगल और 8 प्रकार के आर्य, ऐसे हैं भगवान के श्रावक संघ। वे हैं भेंट देने योग्य, आतिथ्य के योग्य, दक्षिणा देने के योग्य और नमस्कार के योग्य। वे हैं इस लोक में अतुलनीय पुण्य क्षेत्र। उस संघ की मैं पूजा करता हूँ, उस संघ को मैं सिर झुकाकर नमन करता हूँ। हमारे ट्रेडिशन में ये जो पहली 3 वंदनाएं हैं उसको हम अपने पंजों पे रह के करते हैं और उसके बाद हम इस तरह से बैठ जाते हैं जैसे अजन केवली अभी बैठे। हन्नमयं रत्नतैपणा गाथायो चेव संवेग परिकीर्तन पाठं च मणामसे। बुद्धो सुशुद्धो करुणा महानवो, योचंत शुद्ध भर ज्ञान लोचनो। वंदामि बुद्धं अहं आदरेण तं। भगवान बुद्ध हैं परिशुद्ध करुणा के महासागर, अति शुद्ध ज्ञान के चक्षु। मैं उन भगवान बुद्ध की सादर वंदना करता हूँ। धम्मोपदीपो वियतस्य सत्थुनो, यो मग्गपाक मत भेद भिन्न को। लोकुत्तरो यो च तडत्थ दीपनो, वंदामि धम्मं अहं आदरेण तं। उन शास्ता का धर्म दीप की भांति है, जो मार्ग, फल और निर्वाण में विभाजित है, जो लोकातीत है और उस ध्येय को प्रकाशित करता है। मैं उस धर्म की सादर वंदना करता हूँ। संघो सुखेत भ्याति खेत सन्नितो, यो दिट्ठ संतो सुगतानुबोधको। लोलपहिन्नो अरियो सुमेधसो, वंदामि संघं अहं आदरेण तं। भगवान का संघ जो साधना हेतु फलदायक धर्म क्षेत्र है, जिन्होंने भगवान बुद्ध के बाद बोधि प्राप्त कर शांति का साक्षात्कार किया, आकांक्षाओं को त्याग मेधावी आर्य बने, उस संघ की मैं सादर वंदना करता हूँ। इच्छेवकमित्तं अभिपूजयं तं, वत्थुतयं वन्दयाताभिसंखतं। पुण्यं मया यं मम सब्बुपद्दवा, माहोन्तु वेतस्य प्रभाव सिद्धिया। त्रिरत्न जो उच्चतम वंदना के योग्य है, उनकी इस प्रकार पूजा करने से पुण्य के प्रभाव से मेरे कोई क्लेश उत्पन्न न हो। इध तथागतो लोके उपन्नो अरहं सम्मा संबुद्धो, धम्मो च देशितो नियानिको, उपसम्मिको परिनिब्बानिको, संबोधगामी सुगत पवेदितो। इस लोक में तथागत अरहंत
सम्यक संबुद्ध उत्पन्न हुए हैं और ऐसा धर्म सिखाया जो मुक्ति की ओर जाता है, परम शांति की ओर जाता है, निर्वाण की ओर जाता है, संबोधि की ओर जाता है, जिससे सुगत भगवान बुद्ध ने प्रकाशित किया। मयं तं धम्मं सुत्वा एवं जानम जाति पि दुःख जरा पि दुःख मरणं पि दुःखं शोक परिदेव दुःख दोमनस्सुपायासापि दुःखा अप्रिये हि संपयोगो दुःखो प्रिये हि विपयोगो दुःखो यम्पि चं न लभति तम्पि दुःखं संखितेन पंचुपादान खंदा दुःखा। हम उस धर्म को सुनकर ऐसा समझे, जन्म भी दुख है, बुढ़ापा भी दुख है, मृत्यु भी दुख है, शोक क्रंदन शारीरिक और मानसिक पीड़ा और निराशा भी दुख है, अप्रियों का साथ दुख है, प्रियों का वियोग दुख है, इच्छाओं का प्राप्त न होना दुख है। संक्षेप में पांचों खंडों से आसक्ति दुख है। से यथिदं रूप उपादान खंडो वेदनुपादान खंडो संयुपादान खंडो संखार उपादान खंडो विज्ञान उपादान खंडो। ये हैं रूप खंड से आसक्ति, वेदना खंड से आसक्ति, संज्ञा खंड से आसक्ति, संस्कार खंड से आसक्ति, इंद्रियों के विज्ञान खंड से आसक्ति। ये संग परिण्याय धर्मानो सो भगवा एवं बहुलं सावके विनेति। इसका संपूर्ण ज्ञान धारण करने के लिए भगवान ने अपने जीवन काल में बार बार श्रावकों को इसी प्रकार समझाया। एवं भागाच्चपनस्स भगवतो सावकेषु अनुशासनी बहुल पवत्तति। रूपं अनिच्चं वेदना अनिच्चा संज्ञा अनिच्चा संखारा अनिच्चा विज्ञानं अनिच्चं। भगवान ने कई बार श्रावकों की शिक्षा के इस भाग पर बल दिया। रूप अनित्य है, वेदना अनित्य है, संज्ञा अनित्य है, संस्कार अनित्य है, इंद्रियों का विज्ञान अनित्य है। रूपं अनत्ता, वेदना अनत्ता, संज्ञा अनत्ता, संखारा अनत्ता, विज्ञानं अनत्ता। रूप अनात्म है, वेदना अनात्म है, संज्ञा अनात्म है, संस्कार अनात्म है, इंद्रियों का विज्ञान अनात्म है। सब्बे संखारा अनिच्चा सब्बे धम्मा अनत्ताति। ते मयं ओति नामः जातिया जरा मरणेन शोके हि परिदेवे हि दुःखे हि दोमनस्से हि उपायासे हि दुःखोति न दुःख परेत। अपवेनिमस्स केवलस्य दुःख खंडस्य अंतकिरिया पन्यायेथाति। सभी संस्कार अनित्य हैं, सभी धम्म अनात्म हैं। हम सब जन्म, बुढ़ापा,
मृत्यु के बंधन हैं और शोक, क्रंदन, शारीरिक और मानसिक पीड़ा, निराशा जैसे दुखों से पीड़ित हैं और बंधे हैं। आए हम इस सारे दुख समूह के अंत को जान सकने का संकल्प करें। Let's all settle in for quiet meditation for 45 minutes. At 10:15, I'll ring the bell, and then everybody can do their own meditation practice, meditation technique, and we then open up the floor for Dhamma Sakacca.
Voting now, but it's not started. Good morning. 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2. Good morning, everybody. Something not yet. Good morning. One, two. 1 2. 1 2 1 2. Good morning, everybody. Ajahn, probably this one's working. Yeah. So, good morning, everybody. So, it's nice to sit and practice together. I'm
this occasion that for the last few days we've been up in Yamunanagar and Adibadri, getting some inspiration for future practices, for a future project of establishing Sangharama. Much has been already accomplished and much more is to do. So we can dwell on the sense of the good, wholesome outlook on our own practice with many opportunities in the future, but also rest on a sense of merit and a sense of like fulfillment with all the good things that we've already established. For example, I feel very happy that the group has come together this morning and has kept the practice going despite all the obstacles in the last year, 2 years, which must have been quite a lot of dukkha, a lot of frustration, a lot of pain that we've been dealing with. So my appreciation for all of you keeping the Dhamma and keeping the regular sessions going and giving each other support, so friendship and so mutual. Okay, so giving each other support and a backing through good friendship in the Dhamma, and also through everybody's private efforts in keeping the mind at peace, even though there is a lot of dukkha. So I just wanted to express my appreciation for all the accomplishments already of the Aranya Vihara Trust and our group here, and the bearing with the difficulties. And I truly believe that we have a much very promising perspective for the future. So I wanted to ask, anybody got any topic he or she would like to bring up and hear a little bit about that? You're welcome to ask. I can also get the ball rolling by talking about something that has been on my mind. So, reflecting a little bit about the special faith that we have in the Buddha's teachings, because faith and devotion and respect are very important ingredients in our practice. And on the other hand, we have the more rational mind, the more analytic mind, the mind that analyzes and comes to conclusions and is quite sure about things. Whereas the faith mind is inclined towards a certain way of seeing things and anticipating a certain promising outcome. And we are not sure, of course, about the outcome of whatever we are inclined to, but we keep it as a wholesome perspective. And in the Buddha's teachings, we have a lot of right view, like a lot of comments about right view being in many ways the direction that our mind is inclined towards, and sometimes also already some of the confirmed things that we have already been reflecting on.
and the specific balance of anticipating a perspective and also confirming it to a certain level through the more analytical way of looking at things is a twofold thing that we always keep balanced. For example, we know that the Buddha taught about letting go and abandoning, and all the way to the idea that abandoning any desire and craving, that this leads to utter peace and utter tranquility and utter, say, liberation from the things that are limiting us right now and that are oppressing us and are a source for suffering. Yet we can only develop the idea or develop the inclination towards that and gradually practice bit by bit in small steps. But none of us would be here if we didn't have that inclination and that idea of liberation or the idea of letting go ultimately. And we can sense in certain areas that it is very promising. The immediate experience of letting go and abandoning things that we're holding on to gives us a sense of liberation, gives us an uplift towards the aim that we have, the final vision of liberating and transcending the attachments. So we practice step by step, and but we have a vision about what the Buddha was teaching about. For example, the very beautiful Four Noble Truths and the Third Noble Truth about the realization of an ultimate letting go of the desires and cravings, and the realization of what we call nibbana, the unbinding or the ending of all suffering. Of course, we can only anticipate it and only live with the idea of it or a sense of it and try to experience it in our actual conduct through body, speech, and mind, bit by bit, in the context that we are in. And nobody can really state he or she knows for sure that Nibbana exists. But we have faith in Nibbana. We have faith in the perspective of Nibbana, and we can, to a certain level, test it in the intermediate steps that we take towards it. For example, the abandoning of a period of, or like a mind state of utter anger, for example. Like when we have been very, very angry and upset about something, we can literally feel the liberating power and the sense of peace that comes once the anger is gone. Possibly the anger was maybe caused by a misunderstanding. Then it becomes very obvious that the whole thing was a hoax, and how good it feels to have seen through that and not have bought into it, for example. And once one is not angry anymore after having had that transition and that insight, well, it was all a hoax. There's no reason to be angry. Nobody has stolen my keys. I've left them somewhere. And all the stories and all the suffering kind of falls off. And we may try maybe in a thought experiment to recall the mindset of anger again, but it's actually gone. It's like the problem is gone. We're liberated from anger through an insight. Actually, we left the key somewhere. Nobody has been so bad to us to steal it from us, something like that. So we can verify in small steps how it must feel to be liberated by those incidents that we have in our own practice. And the faith side is that through this looking at the experiences that we have and keeping in mind what the Buddha said is a wise angle on things for that perspective already. Maybe in the next incident when we were looking for our key,
we don't fully get angry straight away because we know already it may have been misplaced by ourselves, and it's not that somebody took it or played some tricks on us. So we might not get as angry anymore the second time that we go through this. And somehow thought experiments also can help. We can think about it ahead of time. What if, to a certain level? But it's then important that we think through the emotional process of making ourselves feel open towards the possibilities that we anticipate in our mind, and not be impulsive about it, and somehow use the reflections on bringing us back to an undefined state where we can allow things to happen in the way they need to be, rather than pushing something or investing a lot of say energy into it. And wait first, look first. This is what we train when we meditate. We try to step back and be able to let things be for a while and then have a fresh look. When we open the eyes after a session of sitting down, maybe actually without particularly thinking about a problem like the lost key or supposedly stolen key, maybe when we open our eyes, we suddenly realize, oh, actually, it could well be that I have got the key in my pocket. And we suddenly are open to the possibility and see it with fresh eyes. This is very much what we do with meditation. We haven't solved the problem yet, but we open up the opportunity to see it in a new way, in a more neutral way, through stepping back and letting things settle down. Sometimes we might even use a particular topic and inclining our mind again to thinking what could happen, what may be cause and effect, and what are the main things that are troubling us, or going through certain exercises to create a readiness in our mind. For example, when we teach ourselves in meditation to have a heart of loving kindness as a disposition, so we're laying the ground in a certain direction already, and we can immediately see that this is something we can do if we have that perspective and we work on it. So these are just a few thoughts you want to translate into Hindi. Okay. खवात अजन, तो मैं संक्षिप्त में जो अजन ने बात रखी, पहले तो उन्होंने शेयर किया कि हम पिछले कुछ दिनों से जो नए विहार की बात चल रही है, जिसकी प्लानिंग चल रही है यमुना नगर में, पहले तो उसकी उन्होंने बात की, जिसका कि नाम आरण्य संग्राम रखने का जो हमारे ट्रेडिशन के जो सबसे सीनियर मंक है लुंगपोर लियम, उन्होंने ये सुझाव दिया है। तो इस तरह से अजन केवली बता रहे हैं कि पिछले कुछ दिनों में कई चीज़ें जो जिनसे कि एक अच्छा माहौल पैदा होता है, उनसे हमारा संपर्क हुआ है। हम ऐसी जगहों पर जा रहे हैं और ऐसे प्रोजेक्ट्स के बारे में अब कल्पना की जा रही है जिससे कि सबका मन अपलिफ्ट होता है, सबका मन ब्राइट होता है। इसी तरीके से हम ये भी देख सकते हैं कि और इसी में हमें फिर फ्यूचर आगे भविष्य में आने वाली जो अच्छी कुछ अपॉर्चुनिटीज हैं, जो एक्सपेक्टेशंस हैं फ्यूचर में, एक तो हमारा मन इस तरफ जाता है। और फिर इसी तरीके से जो पूर्व में कुछ अच्छे पुण्यात्मक काम हुए हैं, जिससे कि उदाहरण के तौर पे उन्होंने जो कोविड काल है उसका उदाहरण दिया कि उस दौरान भी किसी न किसी तरीके से इस ग्रुप में लोगों ने साधना जारी रखी इंटरनेट के माध्यम से वगैरह। तो हम इस जो पुरानी बातें हैं उनको याद करके भी अपने मन को प्रीति भरा कर सकते हैं कि हमने एक मुश्किल समय एक बैलेंस के साथ काटा।
इसके बाद अजान ने जो दो तरीके के अप्रोचेस हैं, एक तो श्रद्धा पूर्वक अप्रोच और एक जो विचारात्मक एनालिटिकल अप्रोच है, इसकी बात की। और संक्षिप्त में उन्होंने दोनों के जो एक दूसरे से जो सामंजस्य बना के साधना की जाए, उस चीज को सामने रखा। जो श्रद्धात्मक चरित्र है, श्रद्धा वाला मन है, वो कई चीज़ों को एक्सेप्ट करने के लिए ज़्यादा आसानी से राज़ी होता है। और साथ ही साथ अगर हम ऐसे चरित्र के साथ साथ कुछ हद तक जो विचारात्मक मन है, हमारा विचारात्मक दिमाग है, उसको भी लाएं, पिक्चर में लाएं, तो वो ये जो एक विश्वास था जो श्रद्धा से पैदा हुआ, उसको कंफर्म कर सकता है। और इस तरीके से इस सामंजस्य से जो है, जो दोनों क्वालिटीज को साथ साथ, दोनों क्वालिटी साथ साथ हमारे साधना में सहायता करती हैं, उसको स्ट्रेंथन करती हैं। फिर अजान ने उदाहरण एक दिया कि जिस तरह से जो तीसरा आर्य सत्य है, जिसमें कि सेसेशन की बात होती है, निरोध की बात होती है, हम एक्चुअली देख सकते हैं कि हालांकि उसका जो परिपक्व होना है वो तो निर्वाण की स्थिति है, लेकिन हम सब अपने जीवन में जब उदाहरण के तौर पे किसी एक विषय पे गुस्सा आता है हमें, उन्होंने उदाहरण दिया कि चाबियां अगर मेरी मुझे नहीं मिल रही होती हैं, तो हो सकता है ऐसा मन में विचार आए कि किसी ने ले ली है, इसने ले ली है, इसका दोष है, वगैरह वगैरह, उससे गुस्सा पैदा हो। लेकिन अगर हम कुछ समय उसको रहने दें, उससे छेड़छाड़ ना करें, उस गुस्से वाले मन को एंटरटेन ना करें, उससे छेड़छाड़ ना करें, तो धीरे धीरे हम देखते हैं कि वो स्वयं समाप्त हो जाता है। और शायद बाद में हमें ये भी पता चलता है कि एक्चुअली किसी ने इसमें किसी की कोई भूल नहीं थी। जिस व्यक्ति की तरफ हमें गुस्सा आ रहा था, उसका इसमें कोई योगदान नहीं था, वास्तव में वो चाबी मैं कहीं भूल गया था। तो इस उदाहरण के माध्यम से वो हमें जो ये श्रद्धा और विचारात्मक मन है, उस कॉन्टेक्स्ट में वापस लेके आए कि जब हम इस तरह से देखते हैं अपने जीवन में चीज़ों को, जब हम उन चीज़ों को हो जाने देते हैं, उनकी तरफ प्रतिक्रिया नहीं करते, तो एक तरीके से हमें ये श्रद्धा बनती है कि नेक्स्ट अगली बार भी जब कोई ऐसी घटना घटती है, तो हमारे में शायद थोड़ा सा धैर्य बढ़ जाता है कि चलो मैं थोड़ी देर रुक के देखूं, बजाय इसके कि किसी एक निष्कर्ष पे, जो मेरा एनालिटिकल थिंकिंग माइंड है वो एक निष्कर्ष पे तुरंत पहुंचता है, उसके बजाय मैं ये श्रद्धा रखूं कि धैर्यपूर्वक थोड़ी देर इंतजार करूं, देखूं, एक तो वो इमोशन बदलेगा, और हो सकता है जो वस्तु स्थिति है भी वो भी उस तरीके से ना हो जैसा कि मैं सोच रहा हूं, जैसा कि मेरे मन ने कल्पना बनाई है। तो ये एक न्यूट्रल, अजान ने शब्द यूज किया, न्यूट्रल वे। तो इस तरीके से हम एक न्यूट्रलिटी की कोशिश कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि जो फॉर्मल मेडिटेशन है उसमें भी हम यही करते हैं, हम कुछ समय तक जो सारी गतिविधि हो रही है उसको पोस्टपोन कर देते हैं, उसको एंटरटेन नहीं करते हैं, और यही न्यूट्रलिटी की परिस्थिति को प्राप्त करने की कोशिश करते हैं। So many times when we practice, we somehow anticipate the mindset that we would like to develop and that we believe is possible to develop. For example, just thinking about the perspective of having loving kindness and making an effort to feel these feelings, then sets us in a direction that is very useful, and we can work on it directly. And then there's a way of reflecting on other areas that we know are going to be difficult. For example, old age, sickness, and the acceptance of death of somebody who we love, or somebody like that we really share a lot with, and ourselves even. So we work by inclining our minds to that topic with a clear sense of feeling it out, what our own inner reaction would be to a situation. And this is a very important part of say inclining ourselves towards the teachings of the Buddha and realizing them bit by bit.
where we actually use a contemplation, a wise sense of reflection ahead of the time that conditions may come towards us. And at the same time, there's also the whole field of practice where we simply dwell in the present moment without any, say, way of anticipating our thoughts about the future, and making us ready to then react to whatever comes in a very open way and a very, say, mindful and aware way, state of mind. And so there's those two aspects. One is like something that we somehow, don't want to say the word plan, but we incline ourselves with knowing that these are important topics. These are things we need to work on. And these are things that like we would wish for ourselves and other people to develop. And at the same time, there's this element of just simply letting things happen and letting things arise, and trusting that one is able to deal skillfully with whatever comes. I believe in Buddha's teachings, there is a lot of levels of teachings that the Lord Buddha was giving us guidelines on the intermediate level, saying, for example, you should actually contemplate, there's danger right in front of you, 4 mountains encroaching from all sides. What do you do? And or like giving skillful advice for various levels of activities. If we think about the Mangala Sutta, for example, which we recited a few times in the past few days, where there's like very simple things to be well educated or to be patient. The Buddha singles out certain practices for daily life even, and says this is a good thing to do, to be generous or to look after mother and father. These are direct pointers, and we can incorporate them in the intermediate practice. Whereas eventually we know when the Buddha talks about the practice of, for example, anapanasati, he doesn't really tell you what to do in terms of the thought process, but it reverts to watching, witnessing, and letting the breathing more or less simply happen, whether short or long, and gives a very general outline of like look at impermanence, look at not self, for example, while watching the breathing. So we have got the more abstract instructions and the more detailed. And so there's always a whole variety of things that we can do in order to train ourselves to have a good attitude to things arising. One is the capacity to accept whatever comes and be able to let go of, like say, our predispositions and be really flexible and go along with the things that are coming our way. For example, dukkha or sukha, we know immediately what is coming, and put ourselves in the right state of mind of accepting and abandoning an interest to have it otherwise, letting go. And then there's the other one of building up foundations, where we say directly follow certain, let's say, rights and wrongs or recommendations. And we do have the faith that all of this comes together in a bigger sense of ultimate liberation through working ourselves into the mind state of somebody who is beyond the particulars, and being able even to go further to say, whatever happens in life, it won't be dukkha anymore, and there won't be a suffering arising from this. If we practice to the level that the Buddha himself has realized, we'll be able to even stop all formations that cause rebirth and cause particular situations for us to arise. So we have a faith in the ultimate sense of the awakening to final liberation, and we have a faith that expresses itself in
like intermediate steps where we follow the guidelines, sometimes quite explicitly in daily life or in decisions that arise for us in the situation that we are in. For example, looking after mother and father, or practicing sila, practicing, patience, abandoning unwholesome thoughts, not expressing anger, not buying into anger, for example. These are direct directives, whereas that this all leads to a sense of transcending samsara, transcending the very difficult situations that every human being is in through living life in samsara. We have that faith that the Buddha actually took it all the way there and built up the disposition towards being able to do that at some point through many, many steps, many ways of inclining the mind. अजान फिर हमें आगे इन्होंने थोड़ी गाइडेंस दी हमें कि जो हमारी साधना है उसके अप्रोचेस जो हैं उसकी उस पे इन्होंने कुछ मार्गदर्शन किया, और जो लेयर्स हैं साधना की। तो शुरू में उन्होंने बताया कि दो तरीकों से हम अप्रोच कर सकते हैं। एक तो कि हम पश्चवेकन करें, हम रिफ्लेक्ट, कॉन्टेम्पलेट, ये जो शब्द आचार्य जी यूज कर रहे थे, उन चीजों के बारे में जो कि भगवान की शिक्षा के माध्यम से हमें पता है संभावित हैं, जैसे कि बुढ़ापा, बीमारी, मृत्यु वगैरह वगैरह। तो इन पे जब हम पश्चवेकन करते हैं, जब इन पे हम रिफ्लेक्ट करते हैं, कॉन्टेम्पलेट करते हैं, तो हम वो परिस्थितियां जो उत्पन्न होने की, जिनकी बहुत संभावना है, ऑलमोस्ट अनिवार्य है कि वो उत्पन्न होंगी, उसके लिए हम तैयार होते हैं। और इसी तरीके से जो इसका काउंटर पार्ट है, जो इसके साथ की अप्रोच है, वो अप्रोच है जिसमें कि हम पूरी तरीके से वर्तमान में अपने आप को रखते हैं, वर्तमान में रहते हैं, और वर्तमान में जो भी मानसिक स्थिति, जो भी परिस्थिति अंदर और जो भी परिस्थिति बाहर प्रकट होती है, उससे माइंडफुलनेस शब्द अजान ने यूज किया, सती के माध्यम से डील करते हैं, सती और प्रज्ञा के माध्यम से। फिर इन्होंने उदाहरण दिया, अलग अलग, इन्होंने 2-3 अलग अलग उदाहरण दिए, ये दर्शाने के लिए कि जो भगवान बुद्ध की शिक्षा है वो अलग अलग लेवल्स पे है, अलग अलग स्तरों पे है। एक उदाहरण उन्होंने दिया उस सुत का, जो शायद संगीता जी हमारे लिए चैंट कर रही थी, जिसमें कि वो 4 पहाड़ जो हैं वो किसी की तरफ आ रहे हैं, जिनका की मृत्यु की तरफ उसका इशारा है। तो ये एक लेवल हुआ, एक अल्टीमेट लेवल हुआ। फिर उदाहरण दिया आचार्य जी ने कि जैसे मंगलसूत्र का अगर आप उदाहरण लें, तो उसमें बहुत ही सामान्य डे टू डे रोजमर्रा के जीवन में हमें किस तरह से अप्रोच करना है, क्या साधना का रुख हो सकता है, और बहुत सिंपल चीजें, माता पिता की देखभाल करना, ऐसे कर्म करना जो कि ऐसे काम करना जो कि दूसरों को हानि ना पहुंचाएं वगैरह। तो ये एक काफी बेसिक स्तर हो गया। फिर उन्होंने एक और उदाहरण आनापान सती का दिया, वो भी एक टीचिंग है जिसमें कि कोई बहुत स्पष्ट एडवाइस नहीं है पश्चवेकन पर या इस तरह से किसी भी सामान्य रोजमर्रा के जीवन के आयाम पर, बल्कि एक जनरल आउटलाइन है सती बनाए रखने का। तो इस तरह से वो हमें उन्होंने 2-3 बार ये बात दोहराई कि अलग अलग जो लेयर्स हैं उनको हम समझें। इसमें कुछ इंटरमीडिएट स्टेप्स शब्द अजान ने इस्तेमाल किया, मतलब कि जो चीजें हम अभी कर रहे हैं, तुरंत कर रहे हैं, और फिर जो अल्टीमेट ट्रांसेंडेंस की जो बात है, निर्वाण की जो बात है। और ये जो इंटरमीडिएट स्टेप्स, दोबारा से उन्होंने यही उदाहरण दिए, जैसे कि शील का पालन करना, जैसे कि कुछ जो नकारात्मक विचार हैं, नकारात्मक माइंड स्टेट्स हैं, उनको एंटरटेन न करना, उनको हटा देना, उनको निकाल देना, माता पिता की देखभाल करना। तो ये सारे इंटरमीडिएट स्टेप्स की उन्होंने बात की, जो कि हमें निर्वाण के मार्ग पे ले जाने, वो जो हमें अल्टीमेटली निर्वाण के मार्ग पे, निर्वाण के फल पर ले जाते हैं। So
there's a graduated approach in the Buddha's teaching, or an approach of using many levels of practice at the same time. I believe we're not in a system where there's only do and don'ts and particular instructions. It's not a dispensation where there's like a lot of, like, say, right and wrong, and it's a context and a very reflective situation that we're in. Yet the Buddha gives advice, and there's intermediate steps that we can take. For example, the graduated training, the graduated discourse that the Buddha gave until he finally approached the Four Noble Truths, which is the Four Noble Truths we know is the ultimate teaching of the Buddha, where it implies a realization of Nibbana. And even that is put in terms of being tangibly experienceable through the emphasis on dukkha experience. But before being able to face that, the Buddha gave us all these teachings about dana, sila, and even thinking in terms of punishment and reward. Say there's the anisangsa, the reward for good actions that many Buddhists aspire to. Like, for example, in Thailand, there's an intermediate common approach. If you do meritorious acts, then you'll be reborn in a heaven world. You'll be getting the rewards for that. Basically, good actions, they lead to good results, and you can dwell on that for the intermediate ease of suffering and doing things that are helping to find the next step. For example, then the Buddha talks about the dangers and drawbacks of sensuality once one has more or less lived in a situation of comfort and sensual pleasures. For example, in a heaven realm, like in a good hotel on earth, can be like a heaven. And you see the dangers and drawbacks of getting dependent on that or addicted to that, and see the rewards or the good sides of renouncing the option of living in that content and having to have it. So and that gradually builds up to being able to then see, okay, if I were to abandon my desires, my cravings, my sense of investment, of having to have, wanting to be, and then we're ready for the Four Noble Truths. So this can only be a short outline, because I think it's already 5 to 11, and Luang Por Jundee will come up. But I've been reflecting on this level of practice that many of us do things somehow methodically and somehow with the assumptions in a context. Yes, this is good. Yes, this should be done. And ultimately, we have that perspective that is really unique to the Buddha, of teaching the Four Noble Truths, teaching liberation, teaching to leave everything behind. But we have to approach it in a skillful way, as to not be, say, standing there not knowing what to do anymore, because ultimately, relatively, we're still caught in samsara. So a graduate approach is something that is very, very useful for the practice. We have that sense of the ultimate teachings that makes Buddhism so special, and in comparison to other religions. And we have the relative approach, which may be quite similar to other approaches. For example, Christianity aspires to live in heaven, or the Thai common customs is to make merit in order to get good rewards. And possibly you're well aware of many present-day Hindu worshipping practices where the idea is, let me get something from this. You ask for it, actually. And there's nothing wrong in that level, in that sense. If we then use the next step to see the dependency and the danger of being enslaved into this process, and gradually build up the capacity to let go or to renounce, and then ready for the teachings about real samsara, real dukkha, and the Four Noble Truths. So. Kagat Ajahn.
फाइनली अजान ने जो भासमान सत्य और परमार्थ सत्य उसकी बात की कि भगवान बुद्ध की टीचिंग में एक जो अप्रोच है वो एक क्रमबद्ध अप्रोच भी है और साथ ही साथ जो उसका लोकोत्तर एस्पेक्ट है वो भी है। तो हमें दोनों चीजों को साथ में ध्यान रखना है, दोनों चीजों को साथ में लेके चलना है। उन्होंने जो 4 आर्य सत्य हैं उसका उदाहरण दिया कि अल्टीमेटली उसका मकसद हमें निर्वाण की तरफ ले जाना है, लेकिन उसको ले जाने का जो मार्ग है वो कुशल कर्म, अच्छे कर्म के रास्ते से जाता है, जिससे कि शॉर्ट टर्म में जो हमारे मुश्किलें हैं, प्रॉब्लम्स हैं, दुख हैं, वो कुछ हद तक हल्के होते हैं। इस तरह से जब हम दुख को, दिक्कतों को, परेशानियों को कुछ हल्का करते हैं, तब संभव है कि 4 आर्य सत्यों का जो अगला पड़ाव है, अगला कदम है, वो हम साधना का अगला कदम जो है वो हम उठा पाएं। उन्होंने उदाहरण दिया कि जैसे कि हम किसी होटल में जब रहने जाते हैं तो उसको हम जो देवलोक हैं उससे कंपेयर कर सकते हैं। हम ये समझ सकते हैं कि बहुत ज्यादा अगर हम जो इंद्रिय सुख है उसकी तरफ झुक जाते हैं तो उसके क्या डेंजर्स हैं, उसके क्या दुष्परिणाम हो सकते हैं। और इसी तरीके से अगर हम उनको त्याग देते हैं, अगर हम बहुत ज्यादा इंद्रिय सुख की तरफ नहीं झुकते हैं तो उसके क्या फायदे, उसके क्या रिवॉर्ड्स हो सकते हैं। तो इस तरीके से हम धीरे धीरे जो अपनी एक भाव हमें बना रहता है ना, कर्ता भाव जो बना रहता है, उसको धीरे धीरे जब हम छोड़ने लगते हैं, धीरे धीरे जब हम अच्छे सकारात्मक कुशल काम करने लगते हैं, उस माध्यम से हमारे लिए जो अल्टीमेट पर्सपेक्टिव है वो खुलने लगता है। उन्होंने उदाहरण दिया कि कई संप्रदाय, कई रिलीजन्स हैं, क्रिश्चियनिटी, हिंदू रिलीजन वगैरह, जिसमें कि अच्छे कर्मों पे और इन चीज़ों पे फोकस है, जो कि बहुत अच्छी चीज़ है, आचार्य जी कहते हैं। लेकिन साथ में फिर हमें इससे समझना सीखना भी है कि हम कहीं इसी में ना अटक जाएं, हम कहीं केवल जो इमीडिएट अच्छी चीज़ है, सकारात्मक चीज़ है, उसी को करने में ना अटक जाएं, बल्कि ये समझें कि वो हमारे लिए केवल एक रास्ता है लोकोत्तर निर्वाण की तरफ बढ़ने का। तो ये संक्षिप्त में आचार्य जी ने कहा। So I suggest a short break, and then going to invite Luang Por Jundee to come up, and we'll see whether he's got some reflections for us still, and start with the offering of the meal.
सब लोग प्रणाम करते हैं। नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धास्सा। नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धास्सा। नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धास्सा। एतानि मह्यं भन्ते भक्तानि सपरिवाराणि भिक्षुसङ्घस्य अनुमोदयाम। साधुनो भन्ते भिक्षुसङ्घो एतानि भक्तानि सपरिवाराणि प्रतिगृह्णातु अम्हाकं दीर्घरतं पिता। ट्रांसलेटेड इन हिंदी। मैंने अभी बोला पाली में कि बनते हम सब लोगों ने ये भोजन और अन्य सामग्री भिक्षुसंघ के लिए अर्पित की है। भिक्षुसंघ से प्रार्थना है कि वो इसको ग्रहण करें हमारे दीर्घकालिक हित और सुख के लिए।ถ้าวันนี้เป็นวันที่11พฤษภาคม2565ก็เป็นวันสุดท้ายที่ได้มาเยี่ยมญาติโยมนะแล้วก็ขอแสดงความยินดีในความมิตรไมตรีที่มีต่อกันอาตมาได้มารู้สึกเป็นครั้งที่3แล้วเนาะ3 ครั้งแล้วแสดงว่ามีความผูกพันนะถึงได้มาต่อเนื่องกันตั้งแต่แรกเลยเมื่อได้มาเห็นมาพบนะก็มีความยินดีด้วยที่เรายังมีความผูกพันกันมีความสัมพันธ์กันอย่างดีเนี่ยก็เชื่อว่าครูบาอาจารย์ท่านก็คงมีเมตตาต่อพวกเราไม่เช่นนั้นก็คงจะไม่ได้ไปมาหาสู่กันแล้วก็มาเที่ยวนี้เป็นนิมิตหมายที่ดีเนี่ยก็คือญาติโยมได้พาไปดูสถานที่นะพอสถานที่ถ้าเกี่ยวข้องกับพระสงฆ์ก็มีส่วนสำคัญความเป็นสัปปายะนะแต่พระอยู่ก็ต้องมีความเป็นสัปปายะนะโดยเฉพาะพระที่ท่านต้องการความวิเวกความสงบนะก็ต้องมีสถานที่ที่เหมาะสมที่เรียกว่าเป็นสัปปายะนะญาติโยมก็มีความขวนขวายหาจนเห็นว่าสถานที่ที่นั้นน่าจะเหมาะก็ได้นิมนต์ครูบาอาจารย์พระเจ้าประสงค์มาดูนะ
แต่ก็เสียดายอยู่แล้วหลวงพ่อใหญ่ไม่ได้มา เราก็เลยเป็นลูกหลานมาดูแทน แต่ท่านก็ยินดีด้วยแหละยินดีอนุโมทนาสถานที่ มันก็ยังใหม่หลายสิ่งหลายอย่างนะมันเป็นจุดเริ่มต้นนะแต่เมื่อวานก็ได้คุยกันว่าเราต้องค่อยเป็นค่อยไปนะไม่ต้องรีบร้อนเราใช้หลักธรรมธรรมะนะไปด้วยความเย็นใจสบายใจนะพอเราไม่คิดจะไปแข่งขันกับใครนะอันนี้สำคัญนะไม่ต้องคิดจะแข่งขันนะแต่เราทำเพื่อประโยชน์นะประโยชน์ตนประโยชน์ส่วนรวมนั่นก็น่าจะเป็นจุดมุ่งหมายที่แท้จริงของเรานะไม่ใช่จะไปสร้างแข่งกับเจ้าสำนักโน้นสำนักนี้ให้มีคนนับถือเยอะๆเป็นคนโด่งดังยิ่งใหญ่ในโลกไม่อย่างนั้นพอหลักธรรมเนี่ยต้องการพัฒนาจิตใจเนี่ยให้เกิดความสงบนะลดละได้เท่าไหร่ยิ่งดีเนี่ยมีสำนวนธรรมะทำหนึ่งว่ายิ่งให้ยิ่งได้เนี่ยยิ่งให้ยิ่งได้แต่ไม่ได้หมายความว่าเราจะต้องให้สิ่งของจนหมดตัวคนละเรื่องคนละอย่างไม่ใช่เนี่ยคำว่าให้นั้นเป็นเรื่องของจิตใจเนี่ยโดยเฉพาะสำนวนที่เราใช้กันอยู่เสมอเรียกว่าให้อภัยทานคือถ้าเป็นสิ่งที่ไม่ดีสิ่งที่เป็นความชั่วนะเราให้คือสละไปเลยเสียสละเนี่ยสละความชั่วคืนให้เขาเสียคืนให้ธรรมชาติของความชั่วไปเนี่ยเราก็เลือกเอาแต่สิ่งดีๆเนี่ยแล้วก็พอเรามีสิ่งดีเราก็ให้สิ่งดีอย่างนี้เมื่อสละความชั่วเรามีความดีเราให้ความดีอีกอันหนึ่งสละทิ้งอันหนึ่งสละเพื่อประโยชน์เนี่ยก็คือมีคุณธรรมมีคุณงามความดีเนี่ยให้สิ่งนี้มันไม่เป็นรูปธรรมเป็นนามธรรมแต่มันสามารถเข้าไปสู่จิตใจได้สัมผัสได้ด้วยจิตใจเนี่ยเหมือนเราได้มาพบกันมาเห็นกันบางทีอาตมาก็นึกถึงหลวงปู่ชาที่ท่านไปยุโรปใหม่ๆการสื่อความหมายการรับรู้กันนี่มันไม่ใช่คำพูดแต่มันเป็นเรื่องใจสู่ใจเนี่ยใจสัมผัสกันได้สัมผัสกันได้โดยวิธีไหนเนี่ยมองหน้ากันก็รู้เนี่ยที่เมืองชนก็ชอบเขียนใส่รถนะแต่เขาจะรู้ความหมายหรือเปล่าไม่รู้ก็ว่ามองหน้าเห็นหน้าไม่รู้ใจอะไรนี่หรือเห็นหน้าก็รู้ใจอะไรจริงๆแล้วธรรมะเนี่ยมองหน้าก็รู้รู้โดยภาษาสัจธรรมหลวงปู่ชาด้วยภาษาสัจธรรมเนี่ยถ้าคนใจดีมองหน้ากันมันก็แสดงออกโดยความยิ้มแย้มแจ่มใสสัมผัสกันได้ก็ชื่นใจไงถ้าใจไม่ดีก็มองหน้ากันไม่ได้เนี่ยนั่นเรียกว่าเห็นหน้าก็รู้ใจเนี่ยมองหน้าก็มองเห็นใจเนี่ยฉะนั้นถึงบอกว่าถ้ามีความดีเนี่ยความดีมันไม่เป็นสิ่งของเนี่ยแต่มันให้กันได้เนี่ยให้กันได้ด้วยการสัมผัสทางด้านจิตใจเนี่ยถึงเรียกว่าใจดีใจงามเนี่ยใจดีก็เผื่อแผ่ความดีเนี่ยเหมือนเราได้ไปอยู่ใกล้คนดีคนมีจิตใจสงบเนี่ยเราก็ปล่อยสงบไปด้วยมันก็แปลกนะมันมีอำนาจเหมือนกันนะดังที่พูดวันก่อนที่เราเปิดงานเนี่ยเราไปอยู่ใกล้สิ่งไหนมันก็เป็นสิ่งนั้นจริงๆเนี่ยมันค่อยๆซึมเข้าไปแล้วแต่ทางนี้ทางนั้นก็อยู่ที่บุญบารมีหรืออุปนิสัยปัจจัยของคนที่สั่งสมมา
วันนั้นที่พูดว่าถ้าคนไม่ดีก็ชอบคนไม่ดีเข้ากันได้เนี่ยแต่ถ้าคนมีเชื้อที่ดีเมล็ดพันธุ์ที่ดีเนี่ยไปเจอคนดีมันก็สัมพันธ์กันได้ดีเนี่ยเข้ากันได้ง่ายดังนั้นบัณฑิตคบกับบัณฑิตมันก็ง่ายนะแต่บัณฑิตคบกับคนพาลมันก็ยากหรือคนพาลจะพบกับบัณฑิตเขาก็ไม่ชอบเนี่ยดังนั้นอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราสัมผัสได้นะอย่างพวกเราจิตใจมาในทางเดียวกันเนี่ยเป็นคนชอบศีลชอบธรรมด้วยกันเนี่ยพอมาแล้วมันรู้สึกมันสัมผัสได้ที่ใจเนี่ยแต่มาก็พูดอยู่บ่อยว่าจริงๆแล้วเราถ้ามันใจมันตรงกันแล้วศรัทธาเสมอกันแล้วเนี่ยแม้จะอยู่คนละชาติคนละภาษาก็ตามเนี่ยแต่มันเข้ากันได้เนี่ยอย่างญาติโยมไปมาหาสู่กันความสัมผัสทางด้านจิตใจมันรู้เลยว่ามันเหมือนพี่น้องเลยนะภาษาไทยจึงใช้คำว่าญาติธรรมเป็นญาติกันโดยธรรมมันเป็นอย่างนั้นจริงๆเนี่ยพอไปสัมผัสแล้วเหมือนความรู้สึกว่าเราไม่ได้แตกต่างกันเลยเหมือนญาติเหมือนพี่น้องกันเนี่ยดังนั้นคำที่ว่าญาติธรรมก็ดีถูกต้องมันสัมผัสได้ที่ใจเนี่ยเป็นญาติโดยธรรมดังนั้นถ้าโลกนี้มีคนมีความรู้สึกอย่างนี้โลกนี้คงจะเกิดความสงบเย็นไม่ต้องรบราฆ่าฟันกันหรอกนะแต่มันก็คงเป็นไปไม่ได้หรอกพระพุทธเจ้าบอกว่าคนนี้มาด้วยกิเลสด้วยตัณหานะมันก็มีดีมีชั่วปะปนคนกันมานะดังนั้นจึงมาแยกแยะเอาเองนะถ้าเราต้องการสิ่งที่ดีก็มาเลือกเอามีให้ดีให้ชั่วเลือกเอาได้ในโลกนี้ฉะนั้นภาษิตคำหนึ่งที่ว่าทันโตเศธโธมนุษย์เสสุนะมนุษย์ฝึกตนเท่านั้นจึงจะดีได้นะถ้ามนุษย์ไม่ฝึกตนเอาดีไม่ได้นะอันก็เท่ากับว่าเราก็ต้องมาฝึกตนนะแม้เรามีดีมาแล้วมีความดีมาแล้วนะถ้าไม่พัฒนาต่อมันก็เลวได้เหมือนกันนะเราอาจจะมีบุญมาแล้วแต่เกิดในที่ไม่ดีสังคมในหมู่ที่ไม่ดีเนี่ยก็กลายเป็นคนไม่ดีได้ฉะนั้นเราต้องใช้ภาษาไทยที่เขาชอบใช้ก็ต้องต่อยอดเนี่ยต่อยอดก็คือการพัฒนานั่นเองเนี่ยมีความดีพัฒนาความดีให้มันยิ่งขึ้นเนี่ยอย่างศัพท์ภาษาของพระพุทธเจ้าของเราถึงว่าอาทิศีลอาทิจิตอาทิปัญญาคือทำให้ยิ่งแม้เรามีศีลแล้วมันไม่ยิ่งก็ทำให้ยิ่งนะแต่เราจะมีคำเราอาจจะคุ้นเคยเนี่ยระดับศีลสมาธิปัญญามันจะมี3ขั้นศีลบารมีศีลอุปปารมีเนี่ยศีลปรมัตถบารมีเนี่ยเห็นไหมมันจะเพิ่มขึ้นนั่นก็คือการพัฒนาให้มันยิ่งขึ้นจิตใจก็ถูกพัฒนาเหมือนกันพัฒนาให้สูงขึ้นไปสู่ปัญญาเนี่ยแล้วก็ปัญญายิ่งเนี่ยปัญญาจึงจะนำไปสู่สันติสุขคือความสงบอย่างแท้จริงเนี่ยนี่แหละคือสรุปใจความก็คือธรรมะเป็นเรื่องของจิตใจถ้าจิตใจของเราดีแล้วเนี่ยอยู่ที่ไหนก็ดีหมดถ้าใจดีแล้วเราจะไม่โทษข้างนอกเราโทษข้างในถ้าจะโทษนะแต่ถ้าดีแล้วข้างนอกมันจะเป็นอะไรก็ช่างมันเนี่ยขอให้เราดีใจเราดีก็พอเนี่ยดังนั้นก็ให้เรารักษาใจพัฒนาใจของตนเองถ้าเราดีแล้วโลกก็จะดีเองนะก็ขอฝากเป็นข้อคิดแก่ศรัทธาญาติโยมทุกท่านทุกคนได้มีโอกาสมาเยี่ยมเยียนก็เหมือนกับได้เยี่ยมญาตินั่นแหละพอเราเป็นญาติธรรมนะเรามีธรรมะด้วยกันมาเจอกันพบกันด้วยธรรมแม้จากไปก็จากไปด้วยธรรมนะหมายถึงว่า
จะไม่ได้ทำก็คือกายจากไปแต่ใจยังไม่จากกายมันก็ต้องมีไปมีมาเป็นธรรมดาแล้วนะแต่ถ้าจิตใจมันสัมพันธ์กันแล้วนะมันอยู่ด้วยกันตลอดเวลานะแต่ก็ให้เราสมาคมกันด้วยใจนะถ้าสมาคมด้วยใจแล้วอยู่ที่ไหนเราก็ระลึกถึงกันนั่นก็จะเป็นความสุขความร่มเย็นความเจริญเนี่ยแก่เราและแก่สังคมตลอดไป Luang Por mentioned today so today is the last day of our visit, and he feels it's been a very friendly. So it's the last day of our visit. It's the 11th of May in 2565 or 2022. And Luang Por feels it's been a very friendly and warm visit. And it's already the third time that he has come to visit our group here. And he feels we must have some connection in many ways. And it feels like I'm very happy to experience this relationship with all of you and the group of Dhammarama, Sangharama. And this time the visit was characterized by a special perspective that we've been developing, and we saw to a certain extent already realized the place for a Sangha to live in the future, a monastery, and to enable that possibility to have a place for monks to live and a place for the Sangha to dwell needs to be supportive in many ways. There needs to be what we call sapaya, like supportive conditions in many ways. And this time we've already created the foundations for that in a very good way. And he feels it's a suitable thing, a very good thing to be able to have Sangha reside in the future Sangharama and to enable them to live in a quiet, peaceful way and be able to have a monastery, which definitely needs the support and needs many helping hands to enable a dwelling in this way. And so this is the first step that we've taken, going to see the place. And unfortunately, Luang Por Liam wasn't able to come this time, but we can be sure that he gives his support in both morally and both like with his help. And a place, as we said before, is just the beginning of the monastery. It's not yet the whole finished product. So Luang Por says again, there is no rush, and we do things bit by bit, and dwell in that cool mind that he's been talking about. When we practice the Dhamma, the mind becomes unrushed, unhurried, and cool. So, and we keep in mind that we're not setting up the monastery out of a sense of proving something or being ready before anybody else or in a competition to other places or so. We just do what is useful, and we understand that our perspective is a very suitable one. And so we put in the steps bit by bit. We're not doing this in contrast to others, but by ourselves. And investing or giving to that idea is rewarding in itself. We do one thing and the next thing comes. As he said, like if you, the more you give, the more you receive. So the more we invest or support, then there'll be fruits coming from that. And this is not talking about the material things. It's talking about the mind, the way we put our hearts into it. Can even mean that we invest an attitude of
of what we call abhayadana, like offering fearlessness. We offer our generosity and our wholesomeness rather than something that people would be afraid or averse to. We convince through abandoning our own negative sides, and then it naturally will be returned. What we get in return are feedback of good things. So this act of renunciation is a very special virtue. We renounce the unwholesome aspects in our body and mind and in our actions, and then it becomes a virtue itself to somebody who's abandoned things. And this quality can be felt immediately in the hearts when you meet somebody. Is it somebody who's got some agenda, or is it somebody who's open and has a sense of letting go? And this this feeling of that Luang Por Chah said, like, comes from a heart, from heart to heart. It's nothing material. He sends it in the qualities of another person. And you can see it by looking into the eyes of somebody else, and you know where his heart is. And you can feel it by meeting that person, and you can see it expressed in the joy of his or her actions. And the joy then speaks for itself, that it's a good thing. And again, virtue, and this kind of virtue is not a material thing. It doesn't depend on the material or external steps or conditions. It's just a simply beautiful quality, and it feels good, and it expresses itself. And when we incline ourselves to look at these qualities and develop these qualities gradually, with each step, they will be realized more and come more and more to fulfillment. Similarly to when we orient ourselves at good examples or good people, virtuous people, as Luang Por mentioned the other day, Panditanan Chasivana, like looking at pandits, wise people, not as fools. And it really doesn't work that a wise person and a fool, they can't go along together. They have to be inspiring each other in wisdom, and the qualities of sila and the qualities of having the Dhamma in one's heart can be shared and can be supported by like-minded people. And all of us have the faith in common to walk these steps. Even though we're coming from different countries and different backgrounds, we have that common faith in the virtues and the virtues of the Dhamma, sila, and the sharing of the Dhamma. We can say we're relatives in the Dhamma. In Thai, there's an expression, ben yatitham, we're relatives in the Dhamma. And to have that bond like brothers and sisters in the Dhamma, we feel we're in peace together in the Dhamma, and it feels a closeness and gives us quite a way of supporting the good sides even more. Say, for example, we all come together from different places. We might have good and bad qualities in our hearts. Obviously, we're not free from unwholesome things. But through the example, through the support of others, and through the culture within our relatives of the Dhamma, we were able to choose and enhance the good parts. So in the Buddha said, "Danto Sito," like it's supreme it's foremost to train, and this is the quality of the manusso, the human being, is being able to do supreme training. So we already have something good that we can dwell on. And in Thai, they say they've got the expression saying to top it up,
ต่อยอด like top up one's own goodness through the inspiration of others and being inspired by the idea of like doing something that is reaching out to the highest levels and to the good examples of others. For example, use the expression ati sila, ati citta, ati panya. Ati means like high and special, or like the foremost. So it's our quest to make these things, to enhance them, develop them, and develop sila and samadhi and panya to a higher level through inspiring each other. And the Buddha also talked about the paramitas, like you have the normal level of the paramita, then the upaparamita and the paramata paramita, and like the 3 levels of like building up spiritual potential, all the way to the paramata, to the highest. So we share this momentum of developing ourselves to the highest qualities, to good virtues, and we use panya, and panya is really the thing that the wisdom that really is needed for such a development, and it leads to a feeling of happiness and peace, santi sukha. So I can see that immediately when our mind is wholesome, it feels good. Like it doesn't feel like we're not blaming anybody, we're not being negative about anybody, but we have that as dwelling in our own goodness and dwelling in virtues. Therefore, it's a good thing, of course, to develop and protect this heart of ours, which has an inclination to be wholesome, an inclination to develop towards the higher qualities that the Buddha taught, and make them come to fulfillment. So these are just a few thoughts that Luang Por would like to share on his visiting his Dhamma relatives here. And coming physically by body is one thing, but actually the mind doesn't matter where one is, whether one is apart or in the same room. If one is a relative, one always has a shared recollection of each other's virtues and appreciation for each other. So in that sense, I'd like to wish all of you the best for the development of our common shared aim. Let's sing. ยะภาวาริวหาปุราปริปุเรนติสาคารังเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกัปปติอิจิตังปฏิตังตุมหังกิปะเมวะสมิจจตุสัพเพปุเรนตุสังกัปปาจันโทปนะระโสยถามณิโชติระโสยถาสัพพะโรโควินัสตุมาเตภวัตวันตรายโยสุขิติกายุโกภวะอภิวาทนาสิริสนิจังวุฒาปัจจายโนจัตตารโอธรรมาวัฏันติอายุวันโนสุขังภะลังอายุโทภรโทติโรปฏิภาณโตสุขัสสะตาตาเมธาวิสุขังโสอติกัจฉติอายุงตัตตวาพลังวันนังสุขันจะปฏิภาณโตทิกายุยัสสวะโหติยะตายะทุปปัจจติติภวตุสัพพมังคลังทุสัพพเทวตาสัพพพุทธานุภาเวนัสสทาโสทิภวันตุเตภวตุสัพพมังคลังรักขันตุสัพพเทวตาสัพพธัมมานุภาเวนัสสทาโสทิภวันตุเตภวตุสัพพมังคลังรักขันตุสัพพเทวตา
สัพพสังฆานุภาเวนัสสะทาโสทิภวันตุเต